ये है सीजन 9 का ग्रैंड फिनाले। You have to be just like an artist and showcase your skills to me. I'm not sure how my food is. सोनिया क्या कर रहे हो? Best finales in the entire 9 seasons. The winner of Foodshala season 9 is Foodshala trophy, you're mine. ये तो मेरी ही है। May the best contestant win. All the best. मैं संजीव कपूर तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का इन ओएसिस फूडशाला प्रेजेंटेड बाय फाइन। आज है सीजन 9 का ग्रैंड फिनाले। क्या बढ़िया जर्नी रही सीजन 9 की। जीतेगा वही जिसकी टेक्निक है सही। आपको क्या लगा सीजन 9 इतना आसान होगा? इस बार सीजन 9 में हर राउंड में दी जाएगी एक टास्क। ओ बाप रे, मेरी तो नैया डूब गई, मैं तो गई। मटन कुक नहीं हो रहा, ओवर कुक हो रहा है। टेक इट सीरियसली। आई एम वेरी इमोशनल अबाउट माय फूड एंड यू नो दैट। तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। All you need to do is think from ये जो चिकन है ना, ये आपको ले डूबेगा। मुझे आज ऐसा लगा कि मैं फूडशाला की किचन में खो गई थी। आज के चैलेंज ने दम तोड़ दिया और साथ साथ मुझे भी तोड़ दिया। यार अब नहीं बोल पाऊंगी प्लीज। हमने इस सीजन में सब कुछ देखा। इमोशन। Food is a moment of emotion curated by an artist called chef. If you don't have emotions, you don't deserve to be a chef. Because food is cooked from here. You bring tears to my eyes. Wow, so excited. I can't even express my feelings. That's why I was crying. It was happy tears. तकरार। My 10 minutes are saved now. Chef, but those 5 will give me 15 definitely. I'm sure I'll win this thing. Let's see. ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था I would say. तुम्हें दिल में खुद भी शर्म आ रही होगी और हंसी भी आ रही है। I would go for option number 2. 8.2 तो ऑलरेडी एक टास्क है। अब 9.2 करे तो मजा है ना। इतना मेरे अंदर गुस्सा था कि बस अब मैं जाकर उसको कत्ल कर दूँ। ड्रामा। I can give you in writing that this you cannot fry. May God help you. आप दोनों अपने डिशेस का मर्डर कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? सर डाला ओखली में तो मूसली क्या चीज है? तो कहते हैं ना, you eat with your eyes first. My appetite just died. Food is a serious business. If you can't respect it, you better don't cook. Being in the show is the most important thing. It's an amazing experience, and I will never ever forget it. इन सब चुनौतियों को पार करके जो 2 फाइनलिस्ट आज इस ग्रैंड फिनाले की दहलीज पर पहुंचे हैं, वो हैं सोनिया एंड नेहा। सोनिया फूडशाला सीजन 9 के एक ऐसे कंटेस्टेंट रही हैं जो अपनी कुकिंग स्किल्स और कलनरी टेक्निक्स की वजह से डे 1 से ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आई है। I am personally quite impressed with my performance, so I'm quite happy about it. पूरे सीजन में सोनिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा उनकी कुकिंग टेक्निक्स और उनकी शानदार प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। You have killed it in the flavor. It is so delicious that I cannot explain. एक तरफ सोनिया जो अपनी खूबसूरत एंड क्रिएटिव प्रेजेंटेशन के लिए फेमस हैं, तो दूसरी तरफ हैं नेहा जिनके हाथ के स्वाद में जादू है। नेहा की जर्नी सीजन 9 में काफी उतार चढ़ाव से भरी रही। दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी उन्हें उनके टेस्ट और फ्लेवर्स के लिए मिले फुल मार्क्स,
तो कभी उन्हें उनकी गलतियों के लिए झेलने पड़े शेफ अक्षय के तीखे तेवर। You're using a face mask to steam your dim sums. Tomorrow you're gonna use diapers also in the cooking. This is so embarrassing. इन सभी तकलीफों को पार करके नेहा के फिनाले की दहलीज तक पहुंचने का क्रेडिट जाता है उनके अमेजिंग फ्लेवर्स पर उनका कमांड और उनकी इनोवेशंस को। शायद यही है एक ट्रू होम कुक की पहचान। हमारे दोनों होम कुक्स के अपने अपने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स। अब देखना ये होगा कि दोनों में से कौन सा होम कुक अपने नेगेटिव्स को कम करके फूडशाला सीजन 9 चैंपियन का टाइटल जीत पाता है। मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन। ऑल द बेस्ट। फूडशाला सीजन 9 के दोनों फाइनलिस्ट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए रेड टैग ने उन्हें दिया मौका उनके स्टोर पर शॉपिंग करने का। My style is my confidence, and that's what I need for the finale. Good clothes give me confidence, and I'm all set for my finale. Thank you, Red Tag. Winning isn't everything, but the will to win is everything. To achieve your goals, the only thing that you need is determination. Our grand finale is all about this attitude. What an amazing journey this has been. अभी तक का सफर रहा बहुत इंटरेस्टिंग। इस सीजन में मेरी दी हुई टास्क के ट्विस्ट ने छुड़ा दिए सबके छक्के और मेरी दी हुई उन चुनौतियों को पार करके जो दो कंटेस्टेंट्स पहुंचे हैं ग्रैंड फिनाले में वो है सोनिया एंड नेहा। Welcome to the show, Sonia. Thank you, chef. Oh my god, grand finale. Like, it feels wow. Like, whew. How was your ride so far? It was very exciting. It was a combination of winning, being nervous, running around. But then I'm glad to be here. Very happy to be here. मैं जब लीग में आई थी तो फिनाले का ही टारगेट करके आई थी और आज फिनाले में आ गई। Neha, Yes, I chef. welcome you again on Foodshala. Thank you so much, chef. फाइनल्स में पहुंच के बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि फाइनल्स तक पहुंचूंगी। Excited, nervous, stressed, tired. I would say mixed set of emotions. सारे emotions दिमाग में चल रहे हैं। Very glad that I have reached grand finale. Never thought कि यहाँ पे पहुंच पाऊंगी. So lots of excitement, but at the same time lots of nervousness, I would say. Sonia, Yes, chef. you think you'll win today? Yes, chef. आपको मालूम है मैं तैयारी के साथ आती हूँ, आज भी तैयारी के साथ आई हूँ। Neha, Sonia का confidence देखा आपने आज? Yes, chef, but I am equally confident. So I'll give her a tough fight, and even I'm here to win. सोनिया ने कहा कि मैं ही जीतूंगी तो I felt कि she was little overconfident when she said that. नेहा के एपिसोड्स मैंने देखे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बट फिनाले के लिए मेरे अगेंस्ट होगी ये नहीं लगा था मुझे। Never underestimate your opponent. And the best part is कि आपकी जो strengths हैं वो उनकी weakness हैं और जो आपकी strengths हैं वो इनकी weakness हैं। जब प्लस और माइनस मिलता है तभी स्पार्क क्रिएट होता है। तो चलिए करें create some spark? Yes, chef. Yes, chef. This spark has to be by the medium of your food. Your theme today in this grand finale is the Chef's Theatre. Chef's Theatre sounds amazing, but is very difficult. पहली बार सुन के यही लगा कि क्या ये हम एक्चुअली कर पाएंगे. That was the first thought that came in my mind. A chef is just like an artist. He portrays his skills. Remember going to a restaurant where you see live dumplings being made, chefs making live noodles, someone tossing a thin crust pizza, or a rumali roti. Today, you have to be just like an artist, a culinarian, and showcase your skills to me. काफी प्रेशराइजिंग लगा and there were random ideas going in my mind कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं. आपकी आज की थीम के लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 90 minutes. You have to make 3 dishes, but all of these have to be an artisan's work.
This is Foodshala 9. Tough नहीं हो ऐसा possible ही नहीं है. खाना बनाने की तो स्किल आती है, बट कुछ अलग उसमें करने की स्किल क्या पता हो पाएगा. And by now you must have learnt already that hygiene is very important in our kitchens. And that's the reason we have kept those fine sterilized boxes in front of you. It has all the essential things that you require to stay safe in this kitchen, like sterilized masks, sterilized kitchen towels, tissues, etc. Use them as and when required. So with a high energy and a winning spirit, let's start today's grand finale. And your time starts now. So with a high energy and a winning spirit, let's start today's grand finale. And your time starts now. I'm all set to start the cooking for finale. मेरी फर्स्ट डिश है होल सी बास को मैं बेक करने वाली हूँ सॉल्ट में. सो सी सॉल्ट का मैं एक बेड क्रिएट करके होल सी बास को रख के उसको कवर करके फर्स्ट डिश इज दैट. सेकेंड डिश इज अ रोज panna cotta that I'm gonna make and I'll be dipping the rose into liquid nitrogen और रोज शैटर का मैं इफेक्ट देने वाली हूँ उसके ऊपर. And the third dish is a chicken lapeta curry that I'm gonna make और इसके ऊपर मैं लाइव कोल के ऊपर तेल डाल के स्मोक इफेक्ट दूँगी. Today I'll be making lamb seekh kebab, which will be grilled, and after that I'll be serving it with hot coal, charcoal, with the smoky effect. The second will be pizza, truffle pizza with tete de moine cheese. On the side there will be prawns, grilled prawns. And the third dish will be crepe Suzette. And on the side there will be a pistachio and chocolate sand. And the other side there will be cream espum, which with fruits. That will be my third dish, and that will be served in a beautiful gift style. Neha, Yes, chef. what are you trying to do with this already dead fish? Chef, I'm trying to make a sea bass baked in a salt bed. So I'll be making a dome of salt around it and I'll be baking it inside. Have you ever made this earlier? No. Do you have any clue what happens when you put salt on fish? Overall cooking process changes. The time required for overall fish will reduce because the salt will get hot and uske andar it will get baked. So I have to see the temperature as well कि क्या होने वाला है. Technically, you're absolutely wrong. I was actually little nervous, unsure and scared कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं. Let's check. What herb are you using? I have put thyme, rosemary and lemon. Thyme, rosemary with fish. Yes. Quite an unusual combination. Fish is usually served with dill, parsley, a bit of marjoram. Thyme and rosemary are meat herbs. Are you sure about this? Yes. It was more like दिमाग में आइडिया थी कि ये करना है, but actual execution में क्या होने वाला है मुझे नहीं आइडिया. Did you scale the fish? No, Why? I don't want to scale the fish because Why? it will affect, the salt will affect the skin. So you're gonna serve the fish with the scales on. Yes, because you have to open the fish and eat the meat inside it. Because if I remove the scales, then the salt will penetrate and the fish will become overall very salty. So it is necessary that you keep the scales on so that the salt will not extremely penetrate into the fish. Okay, so I'll ask you a question. Sea bass has a very delicious skin to eat. And if you're not removing the scales, which are already here, then how will you eat that? I am very confident कि fish पर scale रहेगा ही रहेगा and I'm going ahead with that. And imagine,
If I want to serve this, I would probably cut daan. So daan is on the bone. A cut of fish which is on the bone. Right 90 degrees. If I want to eat daan of this fish, then how am I going to eat? क्योंकि इसके ऊपर तो scales हैं और scales I don't know कौन खाता है. आप कितना भी डरा दो, बट इस बार मैं नहीं डरूँ. Sneha, I am also quite confident about you as a chef and your skills. But जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना, लास्ट टाइम बेबी आपको लेट हुआ था. I won't disappoint you, chef. I hope. But ये scales on fish मैं नहीं खाऊंगा. The method of cooking that Neha is using to bake her fish बहुत unique है. At the same time बहुत complicated है. So either she forgot to remove the scales on the fish या फिर आज कोई नया method और technique invent हो रही है. Yes, I'm going on the right track. Maybe technical कुछ गलतियाँ हो सकती है because at the end I'm a home chef, but I'm sure that end product will be good. This is, I guess, a very unique method of cooking fish in इतना सारा salt. Usually first time जो देखता है उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत salty होने वाला है because this is a ridiculous amount of salt that I'm using. But वो वैसा नहीं होगा. It's a new method जिसमें salt bake fish होता है और उसमें इतना salt नहीं जाता. So league round हो गया, quarters हो गए, semis हो गए, and now right here I am in finale. So of course मैं कुछ कच्ची नींबू नहीं हूँ. Sonia, why are your hands shivering? Just a little nervous, chef. I can see that on the table. Yeah. Now I actually experience कि finale का pressure क्या होता है. Sonia, Yes, chef. the temperature of your pan is not right. Okay. This is going to be a crispy crepe. See? Look at this. Two reasons. One, the temperature of the pan is not right. Two, you're not spreading it right. And here we have the hero of the show. Pizza dough. Smells nice. Very flavorful. Good. Perfectly fermented. Good. Continue. So when you're doing it really, you know that pressure is there, and then it's, you know, it's finale, so you know like when the chef is, you know, looking at you, it should smoke the right way. So yeah, that pressure is definitely there. Okay, Neha, what are you making? Show me. I am making a caramelized sugar dome. Okay. So I'll be putting caramel sugar over Start. it. Satisfied? Yes, I'm satisfied. Okay. Demold. Let it cool a little bit. Okay, I'll wait. So, the fish is in the oven. Your second dish, which is something with the sugar bowl, Yes, it's a roast panna cotta. is ready. No, it is Okay. setting. Third, And third is a chicken lapeta curry. chicken lapeta curry. Yes. Lapet तो नहीं रहना. No, it's a Mumbai dhaba style curry where you will be rolling omelets into the curry along with the chicken curry, and I'll be giving it a coal effect. इसमें क्या Smoky. exciting है? Neha, today I want to just get mesmerized. I should be wow, awestruck. वाह, ये क्या बन रहा है? ये लपेटा, पपेटा, चपेटा, ये सब नहीं चलने वाला आज यहाँ. नेहा लपेट रही है, अच्छे से लपेट रही है. जब मैं कैरमलाइज शुगर बोल के ऊपर डाल रही थी तब मुझे ऐसे लगा कि यू नो आई हैड अप्लाइड ऑयल आल्सो ऑन द बॉल, तो आई थॉट कि डाल के बस निकल जाएगा.
बट देन आई डिड नॉट नोटिस कि जो हवा में ह्यूमिडिटी होती है उससे वो शुगर काफ़ी स्टिकी हो जाती है एंड इट वॉज नॉट गेटिंग आउट ओनली. सो देयर आई वॉज लिटिल स्केयर्ड कि अब क्या होगा, बिकॉज दैट वॉज लाइक द मेन फैक्टर इन माई डिश पैना कोटा, और वो ही नहीं निकल रहा था, तो तभी थोड़ी डर गई. नेहा, यस शेफ. निकालो इसको. ग्लास बोल पे तो कैरमल डाल दिया पर ये निकल ही नहीं रहा है. ये नहीं निकलेगा, छोड़ दो. डोंट वेस्ट योर टाइम. जो चीज़ें नहीं होती अटेम्प्ट क्यों करती हूँ? The only thing I can tell you is the temperature is not right and there is something wrong with the method. We'll come back to this later. अब इसको छोड़ो, दूसरा काम करो. Don't waste time. नेहा, onions chop करने तो सीख जाओ. फिनाले में आगे उसको छोड़ दो नेहा. Leave it. Chop your onions fine. Otherwise you're gonna burn them. Leave it on one side. It's okay. कुछ मैं करना चाह रही हूँ और वो हो नहीं रहा है. इट हिट्स मी अ लॉट. अच्छा नहीं लगता मन को. ये फिनाले का राउंड है, घर का किचन नहीं है कि यू नो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग हियर. When chef said कि उसको मत करो, उसको छोड़ दो आप करके, तो इट वाज लाइक कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ करके. एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि यू नो मैं करके शेफ को दिखाओ कि ओके शेफ मैंने निकाल के दिखाया, बट आई वाज जस्ट नॉट एबल टू डू इट. तो वो पूरे इसमें फिर आंसू आने लग गए एंड आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या करूँ अभी वो मोमेंट पे. यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके, लर्न करके या जो स्किल्स आते हैं वो डिस्प्ले करना है. सो यू नीड टू जस्ट प्लान बिट बेटर. आई एम ट्राइंग टू मेक द शुगर डोम और वो हो नहीं रहा. इट्स नॉट कमिंग ऑफ द बोल. बिकॉज देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप दिमाग में प्लान करके आते हो कि यू नो आई विल डू दिस एंड शेफ विल अप्रिशिएट, और वो नहीं हो पाता तो इट इज़ रियली एम्बैरेसिंग. एंड आई डोंट नो कि अगर ये फ्लॉप हो गया तो और क्या कर सकती हूँ मैं. देन आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, बिकॉज आज हारना तो बिल्कुल नहीं है. सोनिया, क्या कर रहे हो? कैरमल? Caramel जलने के बाद बनता है black jack. After black jack, there's a stage when it becomes like a tar, and this can be only used for making roads now. So I was trying to give it a burnt touch and you know give it another tinge, which is like you know like a drip, which you could change your texture. But in that burning, it just got overburnt. सोनिया, बर्न कैरमल कौन खाता है? अगर तुमको खिलाओगे तो आप खाओगी, तो फिर शेफ को क्यों खिला रही हो? Burning was a strategy, but overburnt फिर you know हो ही गया. सोनिया, ठंडी ग्रिल पे लैम सीख कौन बनाता है? टेम्परेचर ठीक करो उसका. फुल है शेफ. लग नहीं रहा. थोड़ा skeptical थी because I was grilling it on an open grill which needed time. But thankfully there was NutriCook which saved my life. तो पूरा जो रशिंग और सब चल रहा था, इट वाज लाइक टू यू नो मेक योर 3 dishes, पुट अप योर बेस्ट डिशेस. तो सारे वही एफर्ट्स चल रहे थे हमारे लास्ट मिनट पे. सोनिया, नेहा, we are cooking for season 9, not for season 10. Come on. We are not here for an occasion. Come on. Guys, your time's almost up. And 3, 2, 1. That's it. Thank you. Neha, Sonia, thank you very much. Pressure.
but happiness, very happy, very very happy and very proud of myself. विश्वास और मन में यही है कि जो डिश बनाई है वो टेस्ट में भी अच्छी हो और जब स्किल दिखा रही हूँ तब शेफ को वो भी अच्छा लगे. Welcome back to the grand finale of Oasis Foodchala, presented by Fine. Sonia, Yes, chef. let's start with you first. Sure, chef. The final touches. Nice. Interesting. Sonia, Yes, chef. looks gorgeous. Thank you, chef. Very nice. I'm glad you liked my presentation because I put in a lot of effort in every bit of it. Okay. Explain your dishes one by one to me. Chef, that is lamb seek kebab, and which is little charcoaled with the effect of the coal down. And the other one is it's a pizza topped up with mozzarella and emmental. That is the big layer which is there, and the florist that you see, that is the tête de moelle cheese, and it's drizzled with truffle oil. On the side, they have served some prawns, and they have just been given a little effect with the blowtorch for the caramelized kind of effect. And the third one is that's crepe Suzette, and I have served it on the side with a little crushed dehydrated chocolate and pistachio, and the other side is yogurt Epsom. Nice. Sounds very appetizing. Thank you, chef. Let's start. Foodchala 2020. Yes, chef. Is it edible? Yes, chef. That's cheese. Cheese. Nice. Which cheese is this? That's a vegan cheese, chef. I myself love fancy plating when I am going somewhere. I myself like it a lot. That helps me to be able to give that to others also. Let's start with your meat first. Yes, chef. The only thing I would like to say is nice to meet you. Your meat is caramelized properly, it's smoky and is tender. Thank you, chef. Very nicely done. थोड़ा skeptical थी because I was grilling it on an open grill which needed time, but thankfully there was NutriCook which saved my life and grilled it very quickly, and the chef liked it in the end, so I'm very happy about it. But a side sauce is missing here. This dish is incomplete without a side sauce. Yes, chef. बहुत जरूरी था. सीख कबाब बिना पुदीने की चटनी. सोनिया, आपने आपके कबाब तो बना लिए, पर चटनी क्या शेफ अपने घर से लेके आएंगे? I do agree with the chef. I plan to make a coriander sauce with it, but I fell short on the time, so that's one thing I missed on. Moving on to your pizza. Yes, chef. The cherry tomato sauce is nice, flavorful, tangy, fresh, Yes, not chef. too sweet, but the pizza base is a bit too dense for me. जितने नेगेटिव कमेंट सोनिया को मिले उतना मेरे लिए अच्छा है. Well, that's not a technical mistake. A pizza base is how dense or thin is a personal choice.
The good part about your pizza is that the truffle oil and tete de moi cheese has made it very flavorful. You know why people scrape tete de moi like this? Yes, chef. Thin scrapes, thin shavings like this? Yes, chef. Why? It looks beautiful, tastes nice, and it's like more of freshly done and eaten at the same time. वो इसलिए क्योंकि जब आप चीज को थिनली स्क्रैप करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, which enhances the flavor of the cheese. Okay. Most of us don't know this. That's why this particular appliance was developed. Moving on to the side dish, prawns. Sonia, these prawns must be giving you blessings. कि आपने मुझे इतने बढ़िया तरीके से पकाया है. Oof. You have Thank proved you. that a simple prawn can be cooked properly. The way you have plated this and the way you have presented these prawns looks so delicious, so cute. Thank you, chef. Well, even I loved that little grill when I saw it. Literally, I fell in love with it. And the time when I would have bought it, I didn't even need it. And I just bought it that, I want to serve something on it. And thankfully, I could use it today. कमेंट सुन के मुझे थोड़ा नर्वस फील होने लग गया था. मेरे दिल में धक 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 बढ़ने लग गई थी. एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि नेक्स्ट नेगेटिव कमेंट क्या आने वाला है उसके खाने के ऊपर. Moving on to the final dish, crêpe Suzette. Crêpe Suzette is a work of art. The sauce is good. Yes, chef. The filling is nice. This chocolate dust on top added at least 5 stars to this. Amazing texture, soft, juicy, tender. The crepes were so beautiful. I fell in love with them myself, It was like a nice gift that you can, serve it to someone. The crepes are like velvet sheets. और ये जो ऊपर सैंड है ना, इससे इतना अच्छा क्रस्ट आया है, इसके अंदर इतना अच्छा क्रंच आया है ना, जो शायद नट्स भी ना ला पाते. The pineapple sauce is again a very good combination with this. Congratulations. Thank you, chef. Well done. Thank you. Neha, tough challenge in front of you. But I'm sure आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया होगा. यस शेफ. मुझे विश्वास है. सही है मेरा विश्वास? बेचारी नेहा बेबी, अभी तो खाना टेस्ट भी नहीं हुआ और रोने लग गई. Why are you crying? Neha, look here. Why are you crying? I don't know, it's a big thing for me and I'm not sure how my food is. I've given my best, hopefully you'll like it. I was nervous, I would say. I was emotional क्योंकि grand finale है. It's a big thing for me. तो जब वो एंड मोमेंट आ गया तभी आई डोंट नो सब मन में भर के आंसू आ गए. नेहा, जब आज का फिनाले स्टार्ट हुआ था, आई केम टू यू एंड यू वर काउंटरिंग क्वेश्चंस. मुझे मेरे किचन में पपेट्स नहीं अच्छे लगते. आप जैसे अच्छे स्ट्रॉन्ग शेफ्स पसंद हैं, जो मेरे से बात करें, सवाल पूछें, अपने आप को डिफेंड करें, अपने डिश को प्रूव करें कि यस, दिस इज द डिश. यस शेफ. यू आर अमेजिंग एट इट. बहुत स्ट्रांगली आपने स्टार्ट किया, कितने कॉन्फिडेंस के साथ. मैंने बड़ी बार आके आपसे पूछा, नेहा ये कैसे कर रहे हो, नेहा ये ऐसे कर रहे हो, एंड यू वर लाइक, शेफ दिस इज द वे इट इज डन एंड आई एम श्योर आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ. वो है नेहा. आई होप आई हैव पुल्ड इट ऑफ. आई होप कि आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे. श्योर शेफ. एप्रिसिएशन मिली मुझे, रोई वो. That made my confidence go right up there. Neha, Yes chef. can I start? Yes chef. Bring a smile on your face and present your dishes to me. Sure chef. Neha, Yes chef. present your dishes to me. मजा आया बिकॉज देयर वाज स्मोक कमिंग आउट और रोज उसमें डिप करके एकदम से फ्रोज हो गया एंड इट एक्चुअली शैटर्ड.
So it was more like I was a kid while watching it जब मैं कर रही थी तब, और मज़ा आया वो करके. अरे यार ये this liquid nitrogen and all this धुआं and everything, you know, it's quite done and dusted now. कुछ नयापन नहीं है. Looks amazing. Thank you, chef. This is what we call experiential dining. Chef is being generous. शेफ ने अभी तक डिशेस टेस्ट भी नहीं करी है और मैंने अभी बस सामने रखी है और शेफ ने कहा कि इट लुक्स ब्यूटीफुल. आई जस्ट कांट बिलीव, क्या ये रियल है? बताइए पहली डिश क्या है? So chef, I have baked a whole sea bass today. I have baked it in sea salt and I have seasoned it with some lemons, thyme and rosemary, and I've also added lemon zest into it. My second dish is a chicken curry and I have given it a coal effect by putting some oil on the live coal. इसका नाम तो कुछ और था. So it's a chicken lapeta that I have made. Yeah, lapeta. Where is lapeta? Tata, bye bye. Gone. And the man of the match. Yes, and the hero of today. Yes, the hero of today is a rose panna cotta that I have tried to make, and I have shattered a rose by dipping it into liquid nitrogen all over it. Nice, impressive. Thank you, chef. ऊपर से तो it was all salt, अंदर fish पकी है, raw है, क्या है, कुछ idea नहीं थी. So while he was actually breaking that salt crust, बहुत टेंशन आ रहा था कि अंदर क्या निकलने वाला है. Salt baked fish. Great idea. Good execution is what I cannot say. Fair execution is what I would probably say. Problem number 1. The outside casing of the salt should have been more golden brown. And that is the reason your fish is getting stuck with the salt. Perfectly brown nahi tha. Chef was struggling to open it out. There was a lot of struggle going on in. I agree to it because मैंने कभी बनाया नहीं था तो इतना knowledge नहीं था कि how it should be ideally. So I guess I agree with the chef. But the best part is, this fish tastes like it was buried in this salt treasure. It is so nice, tender, flavorful. The rosemary, thyme are not overpowering. बहुत बढ़िया flavor आ रहा है इस fish में. आप खुद देखो, एक एक bone अपने आप separate हो रही है. इससे अच्छी fish कैसे बना सकता है कोई? I made it for the first time. I had always seen videos of it, salt baked fishes. Fish पहली बार बनाई थी और पहली बार में jackpot लग गया. So I am totally on cloud nine. Fish के लिए अच्छी comments है, which is very nice and but still perfect नहीं है. If this is your first attempt and आपने इतनी बढ़िया sea bass बनाई है, then I'm sure next time you are gonna kill it. इतना बढ़िया बनाया आपने. Very Thank nice. you. Congratulations. Thank you. Your chicken is bleeding. I saw that and that's a terrible mistake to do. My chicken was bleeding. I guess कि it was the biggest mistake that I did, that too on a grand finale. तो उसके लिए तो I guess no excuses. It was a mistake from my end. Chicken लपेटा. इसने आपको लपेट दिया इसमें. Chicken lapeta कहाँ मिलता है ये? The cooking of the meat is not right. The problem in your drumstick is that you were using broiling method of cooking vis-a-vis braising method of cooking. You should have covered it, cooked it under dum. Chicken lapeta was not up to the mark. Dish बनाते वक्त ही मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो missing है करके. But skeptical होके शेफ को मैंने सर्व कर दिया वो and वही हुआ नतीजा. शेफ को नहीं पसंद आया. Experience dishes में experience लगता है. रोटी सब्जी बनाने की बात नहीं है. नेहा, Yes, chef. फाइनल वन. सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसमें जो खाने से पहले मेरे लिए
बहुत बड़ी problem, which is these flowers are not edible. That's basic. You need to keep in mind. These are gifting flowers. They are treated with chemicals. That's why organic edible flowers are used for garnishing your food. Oh, I didn't know this. Valentine वाला गुलाब खाने को दे दिया. Very nice, Neha. So didn't know the technical part behind it कि edible rose भी होता है and you know एक gifting rose भी होता है. So that I got to know today in fact. So yeah, it was a mistake from my part, I would say. I don't know how to start, but I'll taste. You can just remove the top and eat from Yeah. there. As I mentioned, you used wrong flowers, but panna cotta means cooked cream. And the best panna cotta is the one in which you're able to retain the texture of cream at the same time solidify it. And you have done it right. Congratulations once again. Thank you so much, chef. Like if you go to a restaurant and you can only eat one bite of the dish and the rest of it is covered with unedible stuff scattered on it, so it's not worth your money, right? तो जब पैना कोटा के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स सुने बहुत अच्छा लगा, तो इट फेल्ट रियली नाइस. नेहा, इस पैना कोटा में ऐसा टेक्सचर और इतना बढ़िया रिफ्रेशिंग रोज अरोमा लाना is not an easy task again. The balance of the rose essence with the cream without destroying its property is very, very perfect. Bravo! रोज पैना कोटा ने तो मेरी नैया पार करवा दी. Good attempt. Let's see. Thank you. अब टेस्टिंग हो गई है मेरी भी और नेहा की भी, so I'm very nervous क्या होगा, but I'm quite sure, quite confident कि ट्रॉफी तो मेरी है. मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका है, क्या रिजल्ट होने वाला है कोई आइडिया नहीं है, बट आई जस्ट होप एंड विश एंड प्रे कि मैं जीतूं और वो ट्रॉफी मेरे घर आ जाए. Tough times never last for long, but tough people do. Problems are not stop lines, they are guidelines that shape your future. जिंदगी में हर नया पल एक नई उम्मीद दिखाता है. Today your theme was the Chef's Theatre, and I could actually feel कि मैं एक थिएटर में बैठकर आप दोनों को live in action देख रहा हूँ. This in fact was one of my best finales in the entire 9 seasons. Kudos to both of you. Lot of excitement and lot of self-improvement, self-confidence that I would say Foodshala Season 9 has given me. So Foodshala experience was amazing. I would say it was more of a roller coaster ride. खाना बनाते वक्त काफ़ी सारी उंगलियां मैंने काटी. So I guess with this experience and journey I have learned कि उंगलियां कैसे नहीं काटती है. तो overall a very nice journey I would say. Sonia, Yes, chef. you again surprised me with your hidden talent, your knowledge of ingredients, and the hunger to be the best. Thank you, chef. But again, you made some mistakes this time. Very nervous, very excited. The heart is going up and down, but I'm quite positive. Neha, Yes, chef. I've always been so proud of your cooking skills. Your never give up attitude. But you two goofed up in some dishes. And the moment that you two, I, and our viewers have been waiting for is finally here. One of you is gonna get that trophy. Come, stand next to me. The trophy that you see on the side, it's made for me. सोनिया, एक बात याद रखना कि हार के जीतने वाले को नेहा कहते हैं. This is the final moment. And with this, we'll come to an end of the journey of Foodshala Season 9. यही जीतने आई हूँ और यही जीत के जाऊंगी. ये ट्रॉफी तो मेरी ही हो. You'll see the tears when I get the trophy. And the deserving contestant to be crowned as the winner of Foodshala Season 9 is
फूडशाला की ट्रॉफी देख के तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरी ही है। Foodshala trophy, you're mine. Let's go home together. Foodshala ki meri journey has been very exciting. Nervousness, and in the end, when I won those rounds, the happiness is it's amazing and it's beyond expressing it into words. Foodshala journey was memorable. It was a roller coaster ride, and I will always cherish it in my life. It's a K Company production.